اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात और प्यारे बच्चों, पाकिस्तान इंटरनेशनल की जानिब से कप्तान मुमताज़ शाही और उनका अमला आपको खुशामदीद कहते हैं। हम इंशाल्लाह 1 घंटे में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। बराए मेहरबानी अपने फासले का बांध लें, नशिश की कुर्सी भी रखें, खाने की मेज़ बंद कर लें और खिड़की के पर्दे खुले रखें। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फ़ोन बंद या फ्लाइट मोड पर कर दें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से जहाज़ का नेविगेशन और कम्युनिकेशन का निज़ाम मुतासर हो सकता है। अलबत्ता ये आलात और मोबाइल फ़ोन टेक ऑफ के बाद हिफाज़ती बेल्ट बांधने के निशानात बंद होने से लेकर लैंडिंग के लिए हिफाज़ती बेल्ट के निशानात खुशबू तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस बात का ध्यान कर लें कि आप अपना दस्ती सामान हैंडबैग में हिफाजत से रख चुके हैं। PIA की तमाम परवाज़ों पर तंबाकूनोशी बादशाह इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का इस्तेमाल ममनू है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र आरामदायक खुशगवार गुजरेगा। शुक्रिया। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen and lovely kids. On behalf of Pakistan International, Captain Mumtaz Shaheen is welcome on board. A flight time to Islamabad would be 1 hour. Kindly fasten your seat belt, bring your seat back to an open position, close back your medium and keep the window shutters open. Switch off all electronic devices and mobile phones or put them on flight mode, as the use may interfere with the navigation and communication systems of the aircraft. There may be use of a takeoff with the seatbelt signs are switched off until seatbelt signs are switched on for landing. Please ensure that your helmet is placed properly on the handbag. Use of smoking is illegal and cigarettes is prohibited. We wish you a pleasant comfortable flight. Thank you. उस पे चांस कम है इस्लामाबाद उस तरह से रात होगी ना। ख़वातीन हज़रात तवज्जो फरमाएं। आप अपने हिफाजत के पेश नज़र टेक ऑफ लैंडिंग के दौरान परवाज़ हिफाजती बंद बांध रखें, क्योंकि परवाज़ अचानक नाहमवार हो सकती है। हिफाजती बंद बांधने के लिए मेटल का जबड़ा हिस्सा बकल के अंदर डालकर पेटी कस लें। खोलने के लिए बकल के ऊपर का हिस्सा उठा लें। कैबिन में धूल की मौजूदगी की सूरत में फर्श पर लगी मुतबाद पट्टियाँ जहाज से बाहर निकलने के रास्ते की जानिब की रहनुमाई करेंगी। बराए मेहरबानी नशिश की जगह रखे हिफाजत के बारे में से पढ़ लें। हंगामी हालत में जहाज से बाहर निकलने के 4 रास्ते, 2 जहाज के पिछले हिस्से में और 2 जहाज के अगले हिस्से में शुक्रिया। Ladies and gentlemen, below safety keep your seatbelt fastened during takeoff, landing and throughout the flight. To fasten seatbelt, insert the flat metal into the buckle and pull the strap to tighten it. To unfasten, lift the latch. In case there is smoke in the cabin, follow the restrictions along the aisle floor, which will guide towards emergency exits. Please leave the reflective suction guard cabin seat bump in front of you. There are 4 emergency exits on board this aircraft, 2 in the rear and 2 in the forward. Thank you. 070 takeoff. लैंडिंग कैसे करता है, टेक ऑफ कैसे करता है? ब्यूटी माउंटेन ना आगे कैसे नहीं डायरेक्ट सीधा जाएगा। हाँ तो इसी साइड नहीं सीधा क्या है ना।
cabin crew take your seats for takeoff. K2 का स्टार्ट चांस ही नहीं है, K2 का स्टार्ट चांस नहीं है क्योंकि जहाज इतना लो है। In the A320 you fly over the mountains, in the ATR you fly through the mountains. कराकरम हाईवे चल रही है। पहाड़ है, फोर्ट हिल्स of the कराकरम, फोर्ट हिल्स of the कराकरम। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and Captain Mumtaz Shahi from Flytech. On behalf of PIA and my staff, I welcome you on board PIA flight PK606 from Gilgit, Islamabad.
Our departure from Gilgit was delayed due late arrival of aircraft, and presently we are climbing to our cruising altitude of 18,500. Our ground speed would be inshallah 500 kilometers per hour. We'll be flying Abim Nanga Parbat, Abim Chilas over at Babusa Top, Naran, Kagan, Mansira, Ahmedabad, and landing at Islamabad inshallah. Weather en route is cloudy, and reported weather around Islamabad is also cloudy. I hope you have a comfortable journey. Our staff must be taking care of you people. Thanks for your attention. Ladies and gentlemen, just for your information, we are reaching a point where you can see all three hill ranges. Presently, on our right side is Hindu Kush Hill Range, and on our left side is Karakoram. And after a short while, on left side you will be able to see river Indus passing in between the hills. Ahead of river Indus, it is Himalayas. So this is one point in the world where you can see all three hill ranges. रोड से आते हैं यहाँ 10 मिनट आएगा यहाँ पर
ladies and gentlemen, people sitting on left side can have some view of Nagapur through Ferry Meadows. This is the highest mountain in the region, 26,700 feet. After a little while, you may not be able to see it because of clouds. आपका मोची कितना 27 नहीं number 27 ये कहाँ है मैंने बहुत बड़ी तस्वीर ली थी सारा भी उसका है और क्या छोटे किस में हो गए यानी ये सब फिर हो छोटे गया। में चार अच्छा फिर हो गए कोल्ड ड्रिंक सब यार क्या जॉश केल पागल हो गया हाँ वही जॉश केल वाली सीट पे बैठा हुआ ऐसे तो हाँ ये कितना सही सी होगा तो मुझे फैलावा भी है जॉश खेल से हाँ अस्कर भाई भी मिले कहाँ ये लोग कैसे एक अस्कर के मीटअप दोस्त अरेंज किया था वहीं से किसी दोस्त ने और मैं इस्लामाबाद में था उस वक्त वो जो भी होना चाहिए नहीं सैंडविच छोटी खट पे नहीं सकते मुझे पैटी वरना लैंड हो रही हो और चावल खा रहे हो अभी के लिए वीडियो बंद